नाजरीन और तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद के माना समझने के मुताल्लिक़ आज हम आपके सामने पहली मशक़ जो अलिफ से शुरू होती है। अलिफ पर जब फ़तहा या ज़बर आता है तो वो क्या के मानी देता है और पूरे जुमले को सवालिया बना देता है, और मुंदरजे ज़ैल मिसालों में इसी बात को वाज़ेह किया गया है। Dear students and viewers, we are now explaining the alif with fatha, which is an interrogative particle and that is used in Quran, and it forms a question and is usually translated as is, are, or, do. And here are the examples which will illustrate the use of a in Quran Majid. The first ayat, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam, क्या तुमने नहीं देखा, तरा, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा, कैसा, फ़अला, मुआमला किया, रब्बुका, तुम्हारा रब, बिआद, आद के साथ यानी कौम आद के साथ। और मुकम्मल ट्रांसलेशन, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने क्या मामला किया आद के साथ। और यहाँ आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि आ के माने क्या किए हुए हैं और ये पूरी आयत सवालिया बन चुकी है, और जिसको यहाँ नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दिया गया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। अलम, did not, tara, you see, kaifa, how, fa'ala, dealt, rabbuka, your Lord, bi'ad, with Ad, or the nation of Ad. And the complete translation of this ayat in English is, did you not see how your Lord dealt with Ad? The whole thing is in interrogative form. The next ayat, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Again, alif with fatha is the interrogative particle here. Alam tara, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा, कैसा, फअला, किया, रब्बुका, तुम्हारा रब, बि अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। और इस आयत का मुकम्मल तर्जुमा है, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने क्या सलूक किया हाथी वालों से। सेम थिंग इन इंग्लिश, अलम तरा, हैव नॉट, तरा, यू सीन, कैफा, हाउ, फअला, डेल्ट, रब्बुका, योर लॉर्ड, बि अस्हाबी, with the companions, al-fil, of the elephant. And the complete translation in English is, have you not seen? And this is a question mark which is representing alif with fatha. Have you not seen your Lord dealt with the companions of the elephant? Have you not seen how your Lord dealt with the companions of the elephant? And another example, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ataj'alu, क्या तू बनाएगा, फीहा, उसमें, मन, जो, युफ्सिदु, फसाद करेगा, फीहा, उसमें। And the translation of the entire ayat is, क्या तू उसमें बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा या फसाद बर्पा करेगा। And the same thing in English, ataj'alu, will you place, fiha, in it, man, the one who, yufsidu, will spread corruption, fiha, in it. And the whole phrase in English is, will you place therein one who will spread corruption. Again, this ayat shows alif with fatha is a question mark. Next ayat, Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, क्या नहीं, यजिद का, आपको पाया,
यतीमन यतीम, फ़आवा बस ठिकाना दिया. And the whole translation is क्या आपको यतीम नहीं पाया बस ठिकाना दिया. Same thing in English. Alam did not yajidka, he find you, yatiman, an orphan, fa'awa, and dive shelter. The entire translation and give shelter. The entire translation is that did not find you an orphan and give you shelter. Another example, alam nashrah laka sadrak. Alam kya nahi. Again, a with fatha is a question mark here. Nashrah खोल दिया, laka आपके लिए, sadrak आपका सीना. यानी क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया. And the same thing in English is alam, have not, nashrah, we expanded, laka, for you, sadrak, your breast. And the whole translation is, have we not expanded for you your breast. Another example, alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Alastu, क्या नहीं हूं मैं, बिरब्बिकुम तुम्हारा रब, कालू वो बोले, बला हाँ क्यों नहीं, शहीदना हम गवाह हैं. And the same thing in English, alastu am I not, birabbikum your Lord, qalu they said, bala yes, shahidna we have testified. And the English translation of this ayat is, am not your Lord, they said yes, we have testified. Another example, alam ya'lamu, alam ya'lamu, क्या वो नहीं जानते. Again in English, alam ya'lamu, alam means do not, ya'lamu they know, and the translation of these two words is, do they not know. Another example, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataquluna, क्या तुम कहते हो, अल्लाही अल्लाह पर, मा जो, ला ta'lamuna तुम नहीं जानते. And same thing in English, ataquluna do you say, ala about, Allahi Allah, ma what, la not, ta'lamun you know. The entire ayat is translated as, do you say about Allah what you do not know. Again there is a question mark that is referring to alif with fatha. Another good example, afala taqilun, क्या फिर तुम समझते नहीं. And same thing in English, afala, then will not, taqilun you see reason. That is, then will you not see, will you not use reason. Another ayat where is used in the middle of the ayah, qalu वो बोले, qalu a innaka la anta Yusuf, qalu वो बोले, a innaka क्या तुम ही, la anta तुम ही, Yusuf Yusuf हो. qalu in English, they said, a innaka, or you indeed, la anta surely you, Yusuf Yusuf. And the translation in English is, they said, are you indeed Yusuf? Another part of an ayah, afalam yasiru, again question mark, क्या, falam yasiru, बस उन्होंने सैर नहीं की. And in English, afalam, so have not, yasiru, they travel. And the
in English of the phrase, so have they not traveled. Another ayat. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Alam tara, क्या तूने नहीं देखा, अन्ना के अल्लाह अल्लाह खलqa पैदा किया, अस्समावाती आसमानों, वल अर्दा और जमीन, बिल हक़ हक़ के साथ. And the same thing in English. Alam, do not. Tara, you see. Anna, that. Allah, Allah. Khalaqa, created. As-samawati, the heavens. Wal arda, and the earth. Bil haqq, in truth. And the translation in English is, do you not see that Allah created the heavens and the earth in truth? Now we'll focus on another example. Alam tara kayfa daraballahu mathala. Alam tara, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा कैसी, दराबल्लाहु बयान की अल्लाह ने, मसला मिसाल, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान की है. And the same thing in English. Alam, do not. Tara, you see. Kaifa, how. Daraballahu, Allah sets forth. Mathala, the example. And the whole thing is in English, translated as, have you not considered how Allah sets forth an example? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.